Hello, champions. Welcome to the next lecture on the strategy for the last 15 days to qualify CSIR NET exams by scoring more than 100 plus marks. In this video, I will tell you the right strategy which will help you to crack the examinations with the JRF definitely. Myself, Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. First of all, I welcome you all at my YouTube channel, Dr. Harish Garg. If your target is to score more than 100 plus marks and the JRF, then today I will explain you in detail what strategy you can apply to qualify the CSIR NET mathematics. Make sure if your examination is just the 15 days away, then many of the students among of you are quite nervous, some are excited, while few are thinking like अब तो बहुत देर हो गई सर, अब जो होना होगा वो हो जाएगा. But that approach is a negative approach. Believe me, students, in this video, I want to tell you something which is a very important to qualify the CSIR NET mathematics exam. You must watch it the video till the end और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे कमेंट डाल दीजिए. Now, first of all, the next 15 days will not decide how much mathematics you know. This is one of the most important point for all of you. The next 15 days will not decide how much mathematics you know. Rather, the next 15 days decide how effectively you can use the mathematics whatsoever you have learned in the last 6 months. Based on the effectiveness, you can target your 100 plus marks, but don't study any topic randomly. You have to apply the proper strategy which will help you to qualify the CSIR NET in a very simple manner. Many students who studied for the last 6 months but wasted the last 15 days, and believe me, यही last 15 days जो है आपके JRF को win कराएंगे और यही आपका JRF को lose करवा देंगे. तो JRF is awfully dependent on the last 15 days preparations, which strategy you can follow and which you don't follow. Now, what is the 15 days formula I will provide for all of you? The first 15 days, you can divide the 15 days into the three category: the revision phase, practice phase, and the consolidation phase. In the revision phase, you can quickly revise the complete syllabus in the first 5 days, and you can focus more on the concepts and you can point out your weaker area. But make sure you have to avoid starting the new books, reading the new topics, and the lengthy proofs, while your major activity is to maintain the short notes, formula, PYQ revisions, and the important theorems results. In the second phase, that is a practice phase, your target is to convert concepts into the marks. How you can convert the concepts into the marks? You can do more practice like the previous year questions, some mock examinations, practice the time managements, and you can improve the accuracy. I will explain the each topic, each point in detail as well in this video. But इसके साथ साथ एक और चीज भी आपको दिमाग में रखनी है. You have to identify which topics, whether a linear algebra, calculus of variation, statistics, probability, and so on. Which one is a stronger topics, which one is a weaker topic, and which one is a moderate topic as per your practice in the last 6 months. The last phase is the consolidation phase, in which your target is to improve your confidence and recall the concepts. In this activity, you have to maintain your formula sheet revisions. You can frequently do the mock text analysis or some important analysis theorems. But you have to avoid the new chapters learning, full length books reading, and the marathon study session. You must avoid that. Fine, because that will dilute your preparations from the one angle to the another angle. Now, the tip number one: don't learn anything new. This is the biggest mistake the student generally do before the examinations. Remember, students, the last 15 days, the students fail during the last 15 days. Why? Because they are trying to search the new notes, new books, new YouTube videos, new shortcut tricks,
एंड मेनी मोर थिंग्स। तो उनका सारा से सारा समय आपका कहाँ निकल जाता है? सर्चिंग में। बट बिलीव मी, मोर मटेरियल्स मेक मोर कंफ्यूजन। जो लास्ट 15 डेज है, यू कैन ट्रस्ट योर एग्जिस्टिंग प्रिपरेशंस एंड मेक श्योर in the last 15 days, don't start any new books, don't start the long theory lectures, you don't solve any new research level problem. Research level means जो आपके लिए बिल्कुल नई हो। जैसे आपने अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी, तो डोंट स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी इन द लास्ट 15 डेज। फाइन। Revise only the concept you have already studied. Never start the new topic, but you can always revise the concept that you have already studied. But make sure revision increase the marks, but not the new topic. अगर आप न्यू टॉपिक स्टार्ट भी करते हो तो क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा ना, बिकॉज टॉपिक इज ए वेरी वास्ट। आप 10% पढ़ लोगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपका रिमेनिंग 90 से पूछे, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं मिला। तो वेन एवर यू लूज द कॉन्फिडेंस, you will lose the marks. So revision increase the marks, not the new topics. The golden formula for all of you is you have to make the 70% revision, 20% practice, and the 10% strategy. And make sure again and again, I repeat you, never study the new study material. Your goal in the last 15 days in the golden formula is recall and the retention. Retention means you have to focus on your accuracy. The objective is you have to maximize the revisions, maximum recall, and the maximum accuracy. Always remember my this beautiful line: the candidate who revise the best always outperform who studied the most. Fine. Now, tip number 2. Always divide your day into the 3 sessions. Means you can divide the morning, afternoon and the evening with respect to the time periods. मॉर्निंग सेशन में क्या करोगे आप? सबसे पहले जब भी नया डे होगा तो आपको क्या चाहिए? यू कैन नेवर स्टार्ट योर वीकेस्ट टॉपिक, बिकॉज नए दिन की शुरुआत आप कैसे करना चाहते हो? योर टारगेट इज टू मेक मोर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप वो टॉपिक से स्टार्ट करो जो आपको ऑलरेडी आता है। तो नेवर स्टार्ट योर डे with your weakest topic. Always start with the day which subject you are taking as the strongest. For example, अगर आपको लगता है कि linear algebra is your strongest one, you can start the morning session with the strongest subject. Do any 5 to 10 good questions either as a PYQ or any of the textbook questions. That will help you to build the confidence. तो अगर डे का मॉर्निंग सेशन में आपको कॉन्फिडेंस मिल गया, एंड वी ऑल नोस कॉन्फिडेंस इज अ क्यूमुलेटिव or called as a compound interest, it grow throughout the day. Right? तो जब आपका स्टार्टिंग ही कॉन्फिडेंस से हुई है तो आपका पूरा डे आपका फुल कॉन्फिडेंस से आएगा. In the afternoon you can revise the medium level topics. Fine. In this medium level topic you can focus where you can frequently take the mistakes. आपको mistakes ढूंढनी है, but make sure don't spend more than 15 minutes on the single क्वेश्चन. अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पे 15 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, skip that questions and move forward. In the evening session you can do some practice, some sessional test or some previous year questions. But जैसे आप कोई previous year questions और question की practice करोगे, your target is to spend at least twice as much time you can analyze. Analyze किसका? Your mistakes. Find your mistakes and write on your single paper. Mistake will teach you more than your correct answers. Learn tip number 3. Learn from your mistakes, not from your success. अगर आपने लास्ट 15 डेज में कोई भी गलती करी है, गलती इन द सेंस कोई क्वेश्चन को सॉल्व करे हो, आपसे नहीं हो रहा, राइट अ वन नोटबुक कॉल्ड एज द मिस्टेक नोटबुक. इस बुक के अंदर वो 3 चीजें आप लिखिए आप हमेशा. द फर्स्ट वन इज कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, व्हाई यू मेड द मिस्टेक्स, and what is the correct answer of the question. So before the sleeping you can revise this notebook. तो इस नोटबुक में वो सारी गलती लिखिए जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, क्यों हुए हैं और उसका करेक्ट रीजन क्या है. अगर आप हर 15 दिन में इस कॉपी को रिवाइज करते हो, then don't repeat the mistake in the examinations, you can repeat the correcting thinking. Focus on the high weightage topic.
as you all knows, don't distribute equal times to the every subject. Fine, you can discretize into the three category type: tier 1 topics which are high scoring, moderate, and the less scoring. I can discretize into the tier 1 topic is a linear algebra, complex analysis, and the linear real analysis. All of us knows that in the part B, fine, 5 questions from the linear algebra. From the part C, 5 questions from the linear algebra. That means total 10 questions, 10 questions from the complex analysis, 10 questions from the real analysis asked in the CSIR NET every year. The linear algebra is generally the scoring topic, and you can revise these major topics: eigenvalue, eigenvector, rank nullity theorem, basis and dimensions, inner product space, and the spectral theorem. Similarly, when you are looking for the complex analysis, this is one of the most rewarding subject, and you can follow these topics. Always follows the first preference to the residue theorems, singularities. And the third one is a real analysis. You can focus on the continuity and the differentiability, uniform convergence, and the sequence and series. इन सभी के लेक्चर आपको मेरी प्लेलिस्ट CSIR NET UGC गेट में मिल जाएंगे. आपको इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको लास्ट मिनट रिवीजन लेक्चर भी मिलेंगे और शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ पूरा डिटेल एनालिसिस मिलेगा. टायर 2 में फाइन यू कैन फोकस ऑन द एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल इक्वेशन. स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये दो टॉपिक एलपीपी एंड द मार्कov चेन मस्ट डू दैट. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉची, हीट और वेव इक्वेशंस, इंटीग्रल इक्वेशन एंड द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इन दोनों को मिला के 6 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे. स्टैटिस्टिक्स, एलपीपी और मार्कov चेन को मिला के 3 क्वेश्चंस आएंगे और वेव, हीट एंड कॉची इक्वेशन को मिला के 3 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम द पार्ट बी एंड सी. और मैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी शॉर्टकट ट्रिक्स एंड द लास्ट मिनट रिवीजन लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुका हूं. शॉर्टकट ट्रिक्स इन द 15 सेकंड. बच्चों मेरी गारंटी है, अगर आपने ये प्लेलिस्ट को देख लिया, जितने मैंने लेक्चर करे हैं, आपको JRF निकालने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता. फाइन, बट कंडीशन यही है कि आपको जिस तरह से मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स दी है, आपको प्रैक्टिस भी उसी तरह से करनी है और अप्लाई भी वही करना है. नेवर फॉलो एनी अदर ट्यूटोरियल लेक्चर्स. टायर 3 में वो टॉपिक्स फॉलो करिए बिकॉज टायर 3 में मोस्टली द 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. सो दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड लेस टाइम्स ऑन द न्यूमेरिकल एनालिसिस. इसके अंदर इंटरप्रिटेशन टॉपिक्स के ऊपर मेजर फोकस करिए और फंक्शनल एनालिसिस में यू कैन फोकस मेमोराइज द रिजल्ट्स एज वेल. फाइन, टायर 3 में ऑलवेज द लेस क्वेश्चन एज कंपेयर टू द टायर 1 एंड द टायर 2. Always revise smartly. Whenever in the last 15 days you can revise the topics, क्योंकि आपको new topics तो पढ़ना नहीं है last 15 days में, so you have to do more and more revisions. So revise smartly. How you can revise smartly? You can maintain the notebooks by writing the important formulas, frequently use the shortcut tricks, common mistake and the previous wise questions, which will help you. You can revise this notebook every day, and once you can revise this notebook every day, by the examination you have revised the complete syllabus several times, and that is the backbone to qualify your JRF. Previous practice PY questions. Don't solve just to increase the count. जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, कहते हैं कि सर हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए PYQ. ये तो आप काउंटिंग कर रहे हो अपने आप को. But if once you can solve the question, not to increase the count, because previous question से आप solve तो कर लोगे, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका मार्क्स लूज नहीं हुआ, because you are not in the examination hall. So that's why I'm asking you not to not to solve the question just to count the numbers, while you have to solve at least 8 to 10 years previous year questions. और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, लुक एट द पैटर्न्स एंड द रिपीटिंग टारगेट. इससे क्या होगा, यू हैव टू रिवील द एग्जामिनेशन माइंडसेट. जो भी एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन डिफाइन कर रहा है, उसका माइंडसेट क्या था इन द लास्ट 7 to 8 years और 10 years पेपर्स. वंस यू कैन रिवील द एग्जामिनर माइंडसेट, तो आपको एग्जामिनेशन पेपर ऐसा लगेगा कि पेपर बिकम्स वेरी इजियर एंड वेरी वेरी इजी. The exam start look like familiar with you instead of the difficult, because you already solve. सिर्फ solve करना बड़ी बात नहीं है,
Your target is to look at the concepts which are repeating many times. Also, once you can solve the PY questions, you have to observe very, very carefully which concepts are repeatedly asked, which theorems are repeatedly asked by the examiner, and which techniques are repeatedly asked to solve the problem. So those special attentions on these three questions will give you the extra attentions and hence will give you the extra marks. Improve the speed without the losing accuracy. Fine. Accuracy is one of the most important factors. Once you can revise your syllabus, you can set the timer. If you are able to solve the question within the 2 minutes, then it's a very, very good. Otherwise, you have to find the shorter methods. Fine. Because आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट द करेक्ट आंसर्स इन द मिनिमम टाइम. तो आप बताओगे कमेंट करके कि आपको शॉर्टकट ट्रिक्स कौन से चैनल पे मिलती हैं. ऐसा यूट्यूब पे कौन सा चैनल है जो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स प्रोवाइड करता है. फाइन. स्टूडेंट मस्ट कमेंट ऑन दैट सो दैट जो भी स्टूडेंट इसको वॉच करे उनको भी पता लगे कि कौन आपको शॉर्टकट ट्रिक्स और लेसर टाइम में आपको प्रोवाइड करता है सॉल्यूशंस. फोकस ऑन द एक्यूरेसी. जनरली स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर आई हैव अटेम्प्टेड द 45 क्वेश्चंस. फाइन, दैट्स वेरी गुड, बट दैट डज नॉट इम्प्रेस मी बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ मेनी वर करेक्ट. अगर आपने 45 में से 25 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए तो कितने रॉन्ग हो गए आपके पास? दैट मीन्स 20 आर रॉन्ग. सो इस रॉन्ग की वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी ना. तो क्या फायदा हुआ आपका 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का? उल्टा आप नेगेटिव में चले जाओगे. दैट विल नॉट क्वालिफाई योर मार्क्स. फाइन. सो योर टारगेट इज यू हैव टू make sure negative marking is one of the biggest enemy in the CSIR NET examinations. One careless mistake can erase your marks and attempting the few questions if your accuracy improve. जरूरी नहीं है कि आपको 45 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आने हैं. You can solve only the 25 questions. You still qualify the net if not JRF. Fine. लेकिन आपका पहला टारगेट है नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना. नेक्स्ट इज whether the mock test strategy will work or not. If you ask me personally, mock test is only helpful. कब हेल्पफुल होगा? अगर तो आप ये सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट के अंदर मैंने कितने मार्क्स लिए, then it is not helpful. If you are interested to take the mock tests, fine, you can do, but make sure don't ask that how much did I score in the mock test strategy. However, you have to ask why did I lose the marks. अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट ले रहे हो वो तभी बेनिफिट है अगर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो why did I lose marks in the mock test strategy. अगर आप ये सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट आपने 100 का लिया है उसमें से आपके 72 मार्क्स आ गए, you are happy. No, that is one is the biggest mistake you can do. Your target is to identify where the 28 marks lost. Why you lost your 28 marks? Why? Because the marks lost because of the careless mistake. Marks lost because of the misreading the questions. The marks lost because of the time pressure. However, that marks are not lost because of the lack of the knowledge. Knowledge you have already, but you always lost the marks because of these three different factors. तो इसके लिए आपको क्या करना है? You have to focus why was the question wrong, find which concept you can taken as a mistake, why your calculation as a mistaken, and whether you have the mismanage of your time. Remember students, improvements come from the analysis, not from taking more and more tests. आप चाहे 10 मॉक टेस्ट दे दीजिए, अगर आपने अपनी गलती को एनालाइज नहीं करा, then you always failure in your examinations. Don't focus on the score. Focus on your mistakes. What are the biggest mistakes generally students did in before the examinations? Try to complete the new chapters and the books in the last 15 days. Watching 8 to 10 hours of the YouTube daily. Moreover, student क्या करते हैं कि different चैनल पे चले जाते हैं. फाइन, एक चैनल XYZ है, दूसरा मेरा चैनल है, थर्ड कोई और है, डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट कंटेंट देखते हैं. वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो मेरे को लगता है, बिकॉज
अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हो, फाइन, अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो एक मेरी अलग अप्रोच है क्वेश्चन को डील करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आप किसी XYZ वीडियोस पे देखते हो किसी और चैनल पे, उस प्रोफेसर की, उस टीचर की, उस यूट्यूब की अलग अप्रोच है सॉल्व करने की। बट अगर आप उसे मिक्स कर लेते हो तो एग्जामिनेशन में आपके पास हार्डली 3 मिनट्स हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उन 3 मिनट्स में आप जज नहीं कर पाओगे कि आप कौन से चैनल का, कौन से टीचर का अप्लाई करिए। तो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में, आप कोई भी वीडियो देखिए, इसमें 400 प्लस वीडियोस हैं, मैं आपको एक ही एडवाइस देता हूं, नेवर फोकस ऑन द मोर देन वन चैनल, ओनली फॉलो द वन चैनल। फाइन, चाहे वो मेरा चैनल फॉलो करिए, चाहे वो आप अपने किसी और टीचर का फॉलो करिए। दैट्स वन ऑफ द टू मेजर मिस्टेक्स। अदर मिस्टेक इज you are generally ignoring the revisions, attempting the question emotionally. Emotional means अगर आप किसी क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ तो आप 10 मिनट तक उसे सॉल्व करते रहते हो। डोंट डू दैट। 10 मिनट वेस्ट करने से अच्छा है आप नए 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दो एग्जामिनेशन में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू कैन कंपेयर योर प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड्स। दैट इज नॉट ट्रू। फाइन, स्टडिंग द 12 to 15 आवर विदाउट द रिटेंशन, रिटेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सिमुलेट द रियल एग्जामिनेशन। सो आप एग्जामिनेशन के रूम के अंदर का होल का बिहेवियर आप अपने रूम पे भी बना सकते हो। एवरी डे स्पेंड एटलीस्ट 2 hours विदाउट द मोबाइल फोन्स। व्हाई? बिकॉज यू हैव द नो इंटरप्शंस, नो डिस्कशंस विद द सोशल मीडियाज, नो सॉल्यूशन वीडियोस। train your brain to concentrate more on the 2 hours time periods, so that 2 hour concentration on the brain will will also help you to enhance your skill, and that will improve your practice level. Remember students, don't compare yourself with the any others. During the last 15 minutes, try to avoid to compare कि आपका दोस्त कितने घंटे पढ़ रहा है, how many hours others are studying. Believe me, I always focus on that. Someone study the 12 hours with a poor concentrations may achieve always less. Someone who studied the 7 hours with the focus and the retention study. फाइन, ये जरूरी नहीं कि आपका फ्रेंड 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो आप भी 12 घंटे पढ़ने लग जाओ। That is not true. You can study the 3 hours, 4 hours, or 5 hours per day, but with the focus and the retention phenomena. Compete with your own performance. Fine. आप अपने आप से compete करिए. Whether every day ask whether I am better than the yesterday. If yes, then definitely you are moving towards the JRF. अगर आपको लगता है कि आप yesterday से better नहीं हो, तो आप JRF की preparation नहीं कर रहे, you are just wasting your time. Periods. What is the last 3 day strategy before the exam? Always remember, whenever the last 3 days, you can always revise your formula sheet, your copies, note PY questions, and the mistakes you have did in your mock text analysis. Nothing else. Never study the new topics, subjects, and so on. Late night study avoid करिए last night before the examinations. Last revisions, social media distraction always avoid. Try to away from the social medias from the last 3 days. Take care of your health is one of the another important factors. Sleep at least 7 hours before the examinations. Drink plenty of the waters. Eat always the light food जिससे आपका पेट एग्जामिनेशन के वक्त पे खराब ना हो. Don't experiment with your routine. अगर आपकी रूटीन है जो भी काम करने की, उससे आप एक्सपेरिमेंट मत करिए. That will effect on your health. Remember students, health is one of the important part during the preparations. A tired brain can't solve any of the mathematical problem efficiently. What is the final motivation from my side? As I mentioned you, don't compare yourself with the others. Compare today's preparations with the others, and you don't need to know every question to qualify the JRF. आपको ये नहीं है कि अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने हैं. फाइन, you only need to recognize the right questions. Whether you are able to attempt only the 55 plus questions, that is more than enough to qualify the JRF marks. स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपने काउंट करे, आपने 50 क्वेश्चन करे तो आपको लगता है कि इससे तो कुछ नहीं होगा, तो आप रेंडमली 20 क्वेश्चन और टिक कर आते हो, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होती है. तो आप सारे क्वेश्चन आप 35 पे रह जाते हो, जिसकी वजह से आप अपना लेक्चरशिप के लिए नेट भी नहीं क्वालिफाई कर पाते.
तो मेरी एडवाइस हमेशा हर किसी को यही है, नेवर अटेम्प्ट एनी फेक क्वेश्चन। फेक इन द सेंस जो आपको आता ही नहीं है, नेवर अटेम्प्ट एनी फेक क्वेश्चन। As I mentioned you in the earlier, the next 15 days will not decide how much mathematics you know. The next 15 days decide how effectively you use the mathematics, and make sure you are not the race to learn the more and more things. Fine. Try to be stay calm, stay disciplined, trust your preparation always, believe in yourself, and not to increasing your syllabus in the last 15 days examinations. Fine. My last wording for all of you, be before you enter into the examination hall, believe with the one line in yourself. I have prepared honestly and today I will give my best. अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, आई एम वेरी श्योर जेआरएफ आपका इंतजार कर रहा होगा। फाइन, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो how you can attempt the CSIR net examinations question paper, fine, let me know in the comment box. I will upload the video for you. Till then you can share my videos, mark interested to watch the video how you can attempt the examinations paper, fine, in the comment box. Till then you can like this video, comment on the videos. Best of luck students, happy learning.